2 pages, that means 1 sheet, right? Yeah. So, Hiram and Arsalan, you just need to leave 1 sheet of paper and then you will write some important terms. That is the next heading. Some important terms. Some important terms. Now, please see here. We are going to learn about coordination compounds, and coordination compounds are generally written like this. We have, let us suppose, cobalt, 2 chlorine, and we have NH3. Let us suppose whole 4, and after these square brackets, we have Cl. Okay. Now here you can see there are many things. तो एक एक करके पहले डील करते हैं. So anything outside these square brackets, है ना? We have the square brackets. Anything outside the square bracket, it is known as counter ion. It is known as counter ion. So basically क्या मतलब होता है counter ion? For example, if I have NaCl, so in this Na is in positive and Cl is negative. So both of these, Na is the counter ion of Cl and Cl is the counter ion of Na positive, right? So Cl is countering the positive charge and Na is countering the Cl negative charge. So word वहां से आया है counter ion, है ना? So it is countering the charges whatever is present. Now whatever is inside the square brackets, this complete thing, it is known as complex ion, coordination sphere, coordination entity. There are many names for this. So whatever is inside the square brackets. I will write it down, but before that you have to see here. Please see this cobalt. It is a metal, और इसको हम लोग बोलते हैं central metal atom. Now chlorine and NH2, both of these things are known as whatever is attached, whatever is there apart from the central metal atom, it is known as the ligands. These are ligands. Central metal atom and ligands, both of them, they make the complex ion. Complex ion, no bowling, otherwise it has some other name also. We will write that down. But we will call whatever is inside the square bracket as complex ion, and whatever is outside the square bracket, that is counter ion. Okay. So these are the different terminologies that we have to write about. So first of all, we will write number 1. We have coordination sphere. Coordination sphere or coordination entity. Coordination entity or complex ion. So all of these names are for the same thing, or complex ion. Complex ion. So what is this coordination sphere or coordination entity and complex ion? Please write with me. It consists of central metal atom. Write this with me. It consists of central metal atom. And that metal atom can be having some kind of oxidation state. तो वो कभी-कभी ion भी उसको बोल सकते हैं आप. Central metal ion, central metal atom, bonded to, please write, bonded to fixed number of anions. Fixed number of anions or neutral molecules via coordinate bond. Via coordinate bond. This fragment, this part of the coordination compound, this fragment is always enclosed. In square brackets. In square brackets. सर जी बताएं. जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही कॉम्प्लेक्स आयन का जो बॉन्ड उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. जी उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. आई विल टेल यू व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. पहले इसको लिख लीजिएगा. हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, लिख दिया आप.
ठीक है. जी. So anyone remembers coordinate bond, Krishna or Aram from the previous class? किसी को Yes, याद? sir. हाँ जी बताएं, क्या याद है आपको? So this is where this is like a coordination bond is when two molecules or atoms they combine, but only one atom is donating or giving the electrons. The other atom just receives. ठीक है, करेक्ट, सही याद है आपको. देखिए असलान, इफ यू रिमेंबर, बॉन्ड इज मेड बाय when we talk about covalent bonds, so covalent bonds are made by sharing of electrons, right? So A will come with one of its electron and B will come with one of its electron, and both of them will share these electrons. Now A has also 2 electrons and B also has 2 electrons. ये आपको इतना पता है? Yes, sir. But there are some bonds in which A has extra pair of electron and B has a vacant orbital. That means B has a vacant orbital. का मतलब यहाँ पे B के पास vacant orbital है, there where it can store some electron. It has the capacity of getting some electron, or sometimes you will also have the B atom in positive. ठीक है, B positive. So what happens then? The A molecule, A atom, it gives all the electron. That means both the electron to B, but it does not donate. Donate का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है ना, कोई मांगने आया, आपने उसको पैसे दिए और वो पैसे लेके चला गया, तो डोनेशन वो हुआ. यहाँ पे डोनेशन नहीं हो रहा है. A is giving the electrons to B, but both of them are sharing. ये उसी तरह से होता है कि मान लीजिए आपने पेंसिल भी आप ही लेके आए हैं, ठीक है, और इरेजर और शार्पनर भी आप ही लेके आए. आपका बगल वाला दोस्त सिर्फ पेंसिल लेके आया है, तो इरेजर और शार्पनर आप दोनों शेयर करेंगे, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. तो वो उस तरह का जो शेयरिंग होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो इन दिस व्हाट हैपेंस, A gives A electron to B. Here also we are having this type of covalent bond जिसमें शेयरिंग हो रही है, but both of these electrons they belong to A only. बात समझ में आ गई आपको अरसलान? What is coordinate bond? Yes, sir. ठीक है. Now in this type of complex ions ना, ये आपके पास जो central metal atom है ना, this central metal atom and ligands, ठीक है. So ligands और central metal atom के बीच में जो bond होती है, that is coordinate bond in which ligands are giving electron to central metal atom or ion. As you can see, central metal atom or ion is bonded to anions. Anions का मतलब negatively charged, और neutral molecules हो सकते हैं, जैसे NH3 है. NH3 has a lone pair electron. So no lone pair है तो extra pair of electron, it can be shared. So similarly here also there we have written, or neutral molecules via coordinate bond. So ligands are giving the electrons to central metal atom. ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है. Now let us do some questions. ठीक है, चलिए सबने लिख लिया अगर तो please write this down. अच्छा, by the way, Krishna, also Arsalan and Iram, can you please turn your videos on? I'm starting the focus mode. Yeah, it's on. You have to keep your eye. Don't think Arsalan and Krishna are aware, but Iram आपको तो पता है. How are you, Iram, by the way? आज आपकी तबीयत ठीक है? Yes, sir. थोड़ी सी बात पे आप लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं क्या? इरम? नहीं, वो एक्चुअली मुझे वो चाहिए था, मेडिकल सर्टिफिकेट. मेडिकल सर्टिफिकेट वैसे? अच्छा अच्छा, हमको लगा आप हॉस्पिटल गए थे कि आप बीमार हैं. Okay. Yeah, Arsalan, Krishna Priya, and Iram, yeah, can you please have your videos on? Yes, sir. Can you see, read the question, उसके बाद फिर हम समझाते हैं. Thank you guys. Just one thing. अब देख लीजिए सवाल को. Designate the coordination entity. They are only asking about coordination entity and the counter ions in the following coordination compounds. But what we will do, we will write all the things which are available. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. Now we will be writing about whatever the compound is. उस पेपर लिख लेंगे compound. These are the compounds. Then we will write the counter ion. We can easily identify the counter ion because whatever is outside the brackets, that is your counter ion. Then we can, I will identify the complex, right?
the coordination entity, जो उन्होंने बोला ना coordination entity या complex ion. Inside the complex ion, I will try or we will try to identify the CMA, that is central metal atom, and then whatever after the central metal atom, whatever is left, that is known as central metal atom के अलावा जो भी बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, जरा देखिए. Whatever is left after the central metal atom, ligands. Ligands. Yeah, very good. Ligands. ठीक है. So number 1, एक हम आपको करके बताते हैं. ठीक है. Number 1, we have K2. In brackets, we have PtCl4, right? So what is the counter ion? What is present outside the square brackets? K2. K2. थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा आप लोग, चीज नहीं है आपके लिए. Whenever we write, अच्छा जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ K2O. So obviously K2 तो नहीं है आपके पास, you have 2 K plus ions. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. जैसे कि 2K plus नहीं आयन नहीं देखा आपने, तो फिर आपने देखा होगा MgCl2. But Cl2 is not present in this particular ionic compound as Cl2. तो क्लोरीन तो गैस हो जाता है. It is present as we have Mg2 plus and 2 chlorine negatives. ये कुछ make sense कर रहा है आप लोगों को, कृष्ण प्रिया, अरसलान and Iram? Yes, sir. What about other guy? हाँ, इरम आपको समझ में आया? MgCl2 में जो क्लोरीन है वो कैसे है? 2Cl नेगेटिव के फॉर्म में. Make sense? इरम कहीं गायब है. Yes, इरम जल्दी बताएं. ठीक है. So when we write the counter ion, फिर इरम नहीं लगता अभी. Counter ion, then we will write 2K positive. बात समझ में आ रही सबको? ठीक है. At least what you should write is 2K. पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कितना होगा that I will tell you guys. अभी आप अगर आपको नहीं पता तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है. जनरली यहाँ पे लेकिन you have K and then you have Cl. तो Cl में नेगेटिव होता है 1 negative and here you will have 2K positive. When we write about the compound complex, so what is there inside the coordination sphere? देखिए PtCl4. अब ध्यान दीजिएगा जरा, it's very important. If we are having 2K positive, if we are having 2K positive, so it would be countering how much charge? It would be countering कितना चार्ज काउंटर कर सकता है? If you have एक positive, हाँ, 2 negative charge, so this will be having 2 negative. तभी तो both of these, I mean, can you see it is very similar to the ionic molecules that we were looking here? ऐसे कि मान लीजिए आपके पास होता K2O जो हमने लिखा था ना, उसमें सेम चीज हो रही थी. K2O, in this we had 2 potassium ions with 1 charge and there was 1 oxygen ion with 2 negative charge. तो क्या आपको 2K positive तो दिख गया? Can you see the complex ion acting as O2 negative? Yes, sir. ये कर लेंगे 2K positive, तो फिर आप लोग चार्ज लिख दीजिएगा. Now central metal atom, tell me what is the central metal atom? मेटल क्या है कॉम्प्लेक्स में? What is the metal in the complex? PT. Very good. PT. And what are the ligands? Yeah, very good. What are the ligands? So we have C4 chlorine. ठीक है, 4 chlorines हमारे पास ligands है. हो जाएगा कृष्ण प्रिया, अरसलान एंड अरम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए ठीक है. Please start this. You have 4 more, I think. Yeah. I'm just writing the questions. CL NH3 whole 5. Second number. Second number is K2.
Once you're done, you will send your answers on this number. Which number, sir? I am writing this down. It is. Okay, sir. Okay. I think, yeah. Krishna Priya, you have my number, right? Arslan के पास बस नहीं होगा. Yes, sir, I have your number. You have to message me on WhatsApp, okay, Arslan? Once you get it, Yes. get the answer, just take a photo and send it to me. Yes, sir. If you get stuck in any one of them, please let me know. I will help you guys. Okay, sir. Yeah, Arslan. Okay. Yes, I'll just send you. You have my number. Sorry. I forgot. Just let me check. Jai Krishna Priya has also sent. अरे आपने तो कर दी है लेजीनेस. अरसलान. Yes, sir. नहीं नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा. वो कुछ रीजन है ना, हमने ऐसे बोला है आपको करने के लिए. सवाल नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है ना. इस पर्टिकुलर ऐसे ना बहुत कम सवाल आएंगे आपको कि आइडेंटिफाई व्हाट इज काउंटर एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, है ना. तो बहुत कम सवाल आएगा. लेकिन आई वांट यू टू आइडेंटिफाई, वो इसके लिए हम कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. एंड ऑल्सो लाइक वी हैव 4 CL. तो प्लीज कैन यू प्लीज पुट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट जैसा हमने लिखा है. Okay, sir. ठीक है, जल्दी से कर लीजिए बस. You can don't need to write this one, I mean this whole compound names. आप just 1 2 3 4 5 करके ये बाकी चीजों को लिखते हैं, ठीक है. Okay, just give me a second. अच्छा, wait a second, कृष्णा पे पहले आप चेक कर लेते हैं. मैंने ऐसे उल्टा भेजा है, just a second. काफी सारी. यहाँ पे आपके पास 2K पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कृष्णा प्रिया, इट इज लिगेंड्स, डी है ये. कृष्णा प्रिया, am I audible? Yes, sir. This is ligands, DS. I think आपने T लिखा हुआ है सारे केसेस में. Yes, sir. तो ठीक कर लीजिए जरा. So we have for Cn negative, Cl and prime NH3. अच्छा, you have calculated the oxidation states also. So ठीक है, that is fine. Nickel is your coordinate. ठीक है, correct, very good. It's fine. फिर हम बस आपका देख लेते हैं हम. इरम, थर्ड नंबर वाले थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इनको. CM में व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम?
CrCl. हाँ, तो जैसे पहले वाले में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो प्लैटिनम है, दूसरे वाले में निकल है, तीसरे में क्या है? Yeah, CrCl ना अरे तो क्या होता है CrCl? वो क्लोरीन बोलो। हाँ ठीक है। और क्रोमियम क्लोराइड क्या? Cl क्या होता है? क्लोरीन होता है ना। क्लोरीन हाँ, तो क्लोरीन क्या क्या क्लोरीन मेटल है? इस क्लोरीन नहीं, तो क्या वहां क्लोरीन मेटल में आएगा? नहीं ना, वो कहाँ आएगा? लिगेंड में आएगा। ठीक है, ठीक है, वी हैव वन Cl और फिर बाकी वहां पे NH3। Arslan just waiting for you now. Yes, sir. I'm just finishing this up. Sir, हाँ जी। in the second one, K2NiCN4, इसमें counter ion 2K plus है ना, तो हाँ जी, 2K positive, correct. yes sir, okay sir, I'll finish this up and just send it to you. अरसलान, आपने फोटो नहीं भेजा? Yes sir, I'm just taking the picture. See, positive, then you have, अगर दो 2K पॉजिटिव है तो NiCN4 में क्या हो जाएगा बताइए जरा? Yes sir. NiCN4 will have what charge, Arslan? Here we are having 2K positives. What charge will be there? The complex ion? Yes sir, can you repeat? My grandmother was talking. If Can you are you just having repeat, please? 2K positive, yeah. If 2K positive is the counter ion, like we have two positive charges on the counter ion, what will be the charge on complex? The 2 negative. Very good. 2 negative. Okay. Central metal atom is, and the ligand that we have here is Cn. And normally we have 4 Cns. Okay. 4 Okay, Cn sir. we find ligand cell. In the second case, counter ion is Cl2. ये ध्यान रखिए यहाँ पे. Can you see that in the sorry guys, got disconnected. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Yes sir. ठीक है. Cl.
In the next case, we have this. This is chlorine, right? Chlorine also. This is on the anion side. आपको अगर याद हो, we have KCl is cation, Cl is anion. So the same rules apply. The same rule goes here. So whatever is on the right side will be the counter. don't know why it is happening. It is fine. So here counter ion will be, we have two chlorine and these chlorines will be negatively charged. Okay. These chlorines will be negatively charged. Okay. Now, am I audible? Aslan? Yes, sir. It's just a bit laggy. Okay. I hope that gets. In case we have now the complex we have is CrCl S3 atom is chromium, and the ligands that we have is we have one Cl as a ligand and we have 5 NH3 as a ligand. 5 NH3 as a ligand. If I have like if my voice gets lagging or something, ना please let me know. हम ऐसा नहीं चाहते कि हम बस बोलते जाएं और आप लोग को मतलब आवाज ही ना जाए. Okay. Now in the next case we will have K and there will be 4K positive. The complex. अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, here we are having 2 Cl negatives, so this will be 2 positive, right? So 2 negative charges will be countering or balancing the 2 positive charges. In the next case we will be having Fe and there will be CN6, and here there will be obviously 4 negative charges. The central metal atom will be Fe, and the ligands will be, we have 6 cyanide as a ligand. Next we have nickel. Here we don't have any counter ions, we just have the complex ion, that is nickel, CO4, and then we have the central metal atom as nickel, and the ligands are 4CO, 4 carbons. So please make any corrections if you have to. Yes, sir. Okay, I don't think there is a need of much correction. Chali. Right, next. We have seen what is central metal atom, ligands and types of ligands. It is important. Please write the heading. Ligands and types of ligand. So what is a ligand? Please write these statements with me. The atom, molecule, or ion. It can be an atom, singular atom हो सकता है, can be a molecule or an ion which is capable of donating, which is capable of
donating a pair of electron capable of donating a pair of electron to the central metal atom or ion, जो भी हो, and forms a coordinate bond with it is called ligand. Okay, it's called ligand. Now, the important part here is if you just write the answer that the atom, molecule, or ion which is capable of donating a pair of electron to the central metal, आपने अगर to the central metal atom or ion अगर यहाँ तक आपने लिखा ना, then it will be wrong. Please remember that, because here we are talking about donation. So when we are donating and we are not clarifying that we are forming a coordinate bond after the donation, it would mean that we are donating as a formation of ionic bond, है ना? जैसा कि NaCl के फॉर्मेशन में क्या होता है, सोडियम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, तो आपके पास सोडियम पॉजिटिव होता है एंड देन यू हैव क्लोरीन नेगेटिव. सो दिस इज प्योर डोनेशन. But what is happening after the donation in the case of coordinate bond? We form a coordinate bond, तब वहां पे sharing होती है. So inclusion of this line is very important and forms a coordinate bond with it is called a ligand. बात समझ में आ गई? Arslan, Iram, and Krishnapriya. Yes, sir. Okay. Sir, can you just repeat what you said? I didn't exactly get it. Acha. See, when I say na that if you write till here, this pink mark, then Yes, that sir. answer will be wrong. Then that answer will be wrong. Okay. If you're writing the atom or molecule which is capable of donating a pair of electron to the central metal atom or ion. Because if you're just writing till the pink line, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि शॉर्ट करके लिख सकते हैं. अगर आपने सिर्फ यहाँ तक लिखा ना, then it would mean that we are only telling about the donation part, right? And donation purely it means that we are having like an ionic bond, because Na, if you remember the formation of sodium chloride, Na gives electron to chlorine to form Na positive, and chlorine receives an electron to form Cl negative. Now there is an ionic bond here, but we are not forming ionic bond after donation. After donation, we are forming a coordinate bond. This coordinate bond is telling that the metal atom which we are having and the ligand, they are having a covalent bond, which is having both of them are what sharing the electrons, and there is not a complete transfer of the electron. Donation हो रहा है, लेकिन the metal atom is not leaving with the electrons, it is holding the electrons, and both of these electrons are shared by ligand and metal, both of them. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है पूरा आंसर लिखना जरूरी है यहाँ पे. अगर आपने आधा लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर अच्छा टीचर रहेगा तो वो मार्क्स नहीं देगा जनरली. ठीक है, अगर वो टीचर के आंखों से निकल के नजरों से तब तो ठीक है, अदरवाइज इतना डेफिनेशन ये आंसर सही नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दिस कंप्लीट लाइन शुड बी देयर, फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट, इट्स कॉल्ड लिगेंड. चलिए, अब एक छोटा सा नोट लिखते हैं हम लोग. ठीक है ना, वी आर राइटिंग अ स्मॉल नोट हियर. ध्यान से सुनिएगा. वी हैव मेटल एंड वी हैव लिगेंड. Ligand is giving electrons to the metal atom. Ligand is giving electrons to the metal atom. तो obviously ligand के पास कुछ extra pair of electron होगा. If you remember something from the chapter acid bases, तो Lewis acid base किसी को याद है? What is Lewis acid? What is Lewis base? Any idea? किसी को कुछ याद है? इरम, कृष्णप्रिया, Lewis acid, Lewis base. अरसलान, लुइस एसिड, लुइस बेस कुछ याद है? जी जी बताएं. लुइस एसिड का इलेक्ट्रॉन डोनर. लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है. देखिए लुइस, एक चीज, दो चीज याद रखनी है आपको बस. लुइस के व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लुइस, एंड ही गेव ऑल द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन. ठीक है, और एक चीज तो आपको पता है ना, H प्लस क्या है? एसिड है या बेस है? बोलो भाई, H प्लस क्या होगा? एसिड होगा, बेस होगा? Acid. एसिड ना. अरे शांत क्यों हो गए कृष्णप्रिया? OH नेगेटिव क्या है? एसिड है, बेस है? Base. बेस है. वेरी गुड. ठीक है, नाउ कैन यू सी दैट H प्लस विल टेक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जब आएगा
इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पेस के पास जाएगा ना। Yes, कैन यू sir. सी दैट? दैट मींस according to Lewis, acids gain electron, है ना, any species which gain electron is an acid. और हम ये कह सकते हैं, अगर अब देखिए आप दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, OH नेगेटिव के पास आया तो रिपेल हो जाएगा, भाग जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, है ना। तो बेस के मुताबिक क्या होता है, बेसिस लूज इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए जरा। Can you see the metal atom that is having central metal atom? It is receiving electron. The metal atom is receiving electron. That means I can say the central metal atom in the coordination complex is Lewis acid, because it is gaining electron from the ligand, and the ligand is Lewis base. Ligand is Lewis base. ठीक है, बात समझ में आई? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. I hope you have written this down. आपके बाद देखिएगा Yes. इसके बाद, right, next, on the basis of number of donor atoms, on the basis of number of donor atoms, basis of number of donor atoms, ligands are classified. Ligands are classified as following. नंबर 1 में आते हैं आपके पास मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। मोनोडेंटेट, ठीक है, और यूनिडेंटेट। लिगेंड्स। सेकंड नंबर में हमारे पास आते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। तीसरे नंबर में आते हैं आपके पास, उससे ज्यादा हो जाए तो पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ये सब कहाँ है, जल्दी बताएं। Yes, sir. चलिए, अब सबसे पहले लिखिएगा मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन, लिगेंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम। लिगेंड्स हैविंग only one donor atom. Only one donor atom, and coordinate with central metal atom or ion via one position only. ठीक है, so they are capable of making only one coordinate bond. They are capable of making only one coordinate bond, है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें, कुछ एग्जांपल देख लीजिए जरा, उसके बाद there will be a list of example that you would have to write। ठीक है, एक होता है जैसे मान लीजिए आपके पास Cl negative, right? We have Cl negative. तो Cl negative it has various number of lone pairs, ठीक है, बहुत सारे lone pairs हैं यहाँ पे, but only one of the lone pair is capable of donating the
इलेक्ट्रॉन। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक डोनर एटम है जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली H2O, इन H2O we have two lone pairs from oxygen atom, but only one of these lone pair will be available for donation। एक चीज आप समझिए, अगर मेटल एटम यहाँ पे है, ठीक है ना, मेटल एटम, वो why only one of the lone pairs of oxygen is able to donate the electron? It is because of the position of metal। मेटल अपना पोजीशन तो चेंज करता नहीं रहेगा। वी हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दो अलग अलग जगह। अगर आपको थोड़ा सा याद हो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज लाइक दिस, सही है ना। इफ द मेटल एटम इज हियर, ये तो सिर्फ यहीं पे डोनेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन। हियर वी हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली वी हैव NH3। NH3 में वी हैव ओनली वन लोन पेयर, ऑब्वियस सी बात है दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड बाय ओनली, एक ही डायरेक्शन से वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट अ लिस्ट ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और वहां पे आपको उसका फॉर्मूला क्या है एंड व्हाट आर द डोनर एटम्स आल्सो, ठीक है। मेक दिस टेबल। देन आई विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग दीज टू, जहां पे आपके पास और का वर्ड आ रहा है, साइनाइड में क्या चल रहा है और थायोसाइनाइड में क्या चल रहा है। आई विल एक्सप्लेन दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डाउन, ऑल ऑफ दिस। Raise your hand once again. Krishna Priya, what happened to your video? Yes, I'll turn it on. Sir, I'm done. Now, Priya, just let me know once you're done. Hiram, you can lower your hand.
Okay. So, fine. Now all of you can lower your hand. Next, write bidentate ligands. I hope the meaning is already very clear for you guys. Bidentate ligands. Is right. Ligands that can coordinate via two positions. So that means they will be having obviously two donor sites. Okay? There are two positions from which they can coordinate. So they have the ability to coordinate from two positions. Whether they do or not, that is another case. Okay, but they have the capacity or the capability of donating from two different times. Now, what are some examples? तो कुछ examples हम लिखा रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा बिल्कुल. Number one is oxalate ion. Oxalate ion. Okay, so oxalate ion, it is also sometimes written as OX. Now, what is oxalate ion? If you're whether you don't know or no, oxalic acid is something. Oxalic acid has a formula H2C2O4. If you want to know the structure, it is very easy. We have two carboxylic acid, COOH. ठीक है, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ज्वाइन कर दीजिए. एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा आपने, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. दिस इज ऑक्सलेट, सॉरी, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. ये क्या आपके पास ऑक्सैलिक एसिड. इफ यू वांट टू मेक द ऑक्सलेट आयन, आप इससे हाइड्रोजन निकाल दीजिए बस. If you remove one hydrogen, both of them will get one negative charge here and one negative charge here. Now, both of these oxygen atoms have the capability of donating electrons to the metal atom. और यहाँ से आपको दिख रहा होगा that oxalate ion, it has two negative charge, O negative and O negative. All of you understood oxalate? Yes or no? Please tell me. Arsalan, Krishna Priya, and Karam. हाँ जी, समझ में आया ना सबको? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा आपको ना नेम्स डिफिकल्ट लगेंगे, बट डोंट वरी. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं आपको. दिस इज इथाइलिन डाइअमीन. इथाइलिन डाइअमीन. इसको कभी कभी यू विल सी दैट इट इज रिटन एज EN. ओके, EN से डिनोट किया जाता है इथाइलिन डाइअमीन. व्हाट इज इथाइलिन डाइअमीन? सेम केस है आपके पास कि आपने दो कार्बन लिए एंड बोथ ऑफ दीज आर हैविंग NH2 NH2. CH2 CH2 से इससे बॉन्डेड एक NH2 है and here another NH2 bond is bonded to CH2. अगर आपको दिख रहा हो that these two pair of electrons can be also donated. ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का इधर मेटल को डोनेट कर लेंगे. ठीक है. देयर आर फ्यू मोर. इनको लिख लीजिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका बस डायग्राम ऐसे बना लीजिए. उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको है नहीं, बस नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत नहीं. ठीक है. So here we have dipyridine and we have orthophenanthroline. So you just need to remember that both of these are bidentate. ठीक है. और आपको ये ज्यादा जरूरी है, dipy and this is PHEN. Then we have one more that you have to just know, that is glycinate ion. If you are from bio background, तो आपको शायद ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पता होगा. ग्लाइसिन is an amino acid, right? सही कह रहे हैं हम? हाँ जी, बायो वाले. ग्लाइसिन अमीनो एसिड है ना? नहीं है. नहीं है क्या किसी का बायो? कृष्ण पे व्हाट डू यू हैव? मैथ्स. I took biomaths, sir. Biomaths. सो बायोमोलिक्यूल्स बनी अभी. Biomolecules is my least favorite subject, sir. I think I forgot everything from last year. अच्छा, you forgot everything. ठीक है, तो फिर से. So this is ग्लाइसिन होता है. ग्लाइसिन में it is amino acid. So in that you will be having NH2 के दो इलेक्ट्रॉन्स और COO नेगेटिव से. So this is glycinate ion. बहुत ज्यादा आपको जो यूज होगा ना वो ऑक्सलेट और इथाइलिन डाइअमीन है, तो इसको तो भूलना नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि इनको याद नहीं करना है. व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन नॉट फॉरगेट ऑक्सलेट एंड इथाइलिन डाइअमीन. इज दैट क्लियर? एरम, अरसलान एंड कृष्ण प्रिया. Yes, sir. Yes, sir. ग्लाइसिनेट के साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा, इसको GLY से भी डिनोट करते हैं, as we denote dipy, DIPY, and PHEN, EN, और ये OX. This is GLY. And obviously GLY is having one negative charge. Write this down, फिर उस पर आगे देखते हैं.
All of you done? Iram, Arsalan and Krishna Priya. Yes, Yes, sir. sir. इरम आप सो जा रही हैं क्या? नींद आ रही है आपको? हाँ इरम, व्हाट हैपेंड? ध्यान से देखिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड। In polydentate ligand, ligands that can form coordinate bond, ligands that can form coordinate bond via more than two position. ठीक है? ध्यान सुनिए, एग्जाम्पल में आपके पास बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, नाम सुनिएगा, डाइइथाइलिन, डाइइथाइलिन डाइअमीन, डाइइथाइलिन डाइअमीन। तो इसको शो करते हैं कैसे? DIEN। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डाइइथाइलिन। अच्छा, इथाइल पता है आप लोगों को क्या होता है? यहाँ C2H5 क्या होता है? इथाइल पता है सबको? हाँ या ना? मिथाइल, इथाइल, C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है ना? ध्यान दीजिए। कृष्णा प्रिया, कैन यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज लिसन। ठीक है, तो सी आपके पास इथेन है C2H6। एक हम आपको चीज ना बता देते जो आपको काफी हेल्प करेगी, दैट इज C2H6 क्या होता है? दिस इज इथेन। अगर हम इथाइल की बात करें तो ये क्या होता है? C2H5। अगर हम बात करें इथाइलिन की, ये होता है C2H2, C2H5, C2H4, सॉरी, इट इज C2H4। यानी कि C2H4 कैसे लिख सकते हैं आप? CH2 और इधर भी CH2। बात सही है, इस पे भी कुछ लगा होगा, इस पे भी कुछ लगा होगा। कैन यू से दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास? इथाइलिन एंड हाउ मेनी? डाइइथाइलिन। तो आपने ऐसे लिखा, यू हैव इधर CH2 में और इधर CH2 में, ये कार्बन हो गया ना, कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो बोथ ऑफ दिस कार्बन एटम में कुछ कुछ लगा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक NH2 और इसी तरह का सेम आपके पास होगा ऐसे। Here you will have one nitrogen atom with hydrogen, और यहाँ पे आपके पास ये आपका एक दूसरा NH2। So here we are having one lone pair, another lone pair, another lone pair। तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो दिस इज डाइइथाइलिन, दो इथाइलिन है, एंड डाइ, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन कितने हैं आपके पास? दो हैं। इथाइलिन डाइमीन क्या था देखिए आप, दिस वाज इथाइलिन डाइमीन, डबल कर दिया आप और एक ही नाइट्रोजन के साथ फ्यूज कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो ट्राइडेंटेट, इफ यू कैन सी, इट इज ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट। और सुनिए, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन एक होता है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। अगर हम सेम वही चीज करें, NH2, फिर एक कार्बन एटम, यहाँ पे आपके पास NH, फिर यहाँ पे CH2 CH2, फिर यहाँ पे आपके पास NH, और इधर से आपके पास दो CH2 और फिर से NH2। Now, if you see here, the electron pairs that we have, this nitrogen, this nitrogen, this nitrogen, and this nitrogen, चारों के चारों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। पॉलीडेंटेट, ये कितना हो गया? दिस इज टेट्रा, इसको ट्राई-ईएन बोलते हैं, ट्राई-ईएन, एंड दिस इज टेट्राडेंटेट। आप लोगों को देखिए, एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, तीन इथाइलिन दिखा कि नहीं दिखा? इन ऑल ऑफ दिस ये 3 इथाइलिन, ये एक इथाइलिन हो गया ना, CH2 CH2, अनदर CH2 CH2, अनदर CH2 CH2, दिखा 3? Yes, sir. अरे ठीक है, तो इसी तरह आप लोग पढ़िएगा तभी जाके होगा।
अदरवाइज अगर आप रटने बैठेंगे इन चीजों को ना, थोड़ा सा नाम के साथ आपको रिलेशन ना लाना पड़ेगा। अगर आप बैठने, एक आपने बहुत ज्यादा ही फेमस एक रील हुई थी इंस्टाग्राम पे, वो जो अगला मॉलिक्यूल है ना उसके बारे में था, वो लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। और ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है आपके पास, थोड़ा हम स्ट्रक्चर बनाए, पहले बताओ, एक बार बताओ। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर नाम देख लिया, नाम से स्ट्रक्चर लेके आए, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा नाम के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना? तो ये CH2 से स्टार्ट होता है, जो कि आपका बहुत फेवरेट है अभी तक, उम्मीद करते हैं CH2 देन हियर वी हैव वन नाइट्रोजन, हियर वी हैव वन नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे भी आपके पास एक नाइट्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एक नाइट्रोजन एटम। और फिर ये नाइट्रोजन एटम ज्वाइन हो रहा है CH2 से, विच इज हैविंग COO नेगेटिव, ठीक है। फिर ये वाला भी ज्वाइन हो रहा है CH2 से विथ COO नेगेटिव। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, CH2 फॉलोड बाय COO नेगेटिव। ये नाइट्रोजन के पास भी CH2 फॉलोड बाय COO नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, नाउ आई हैव शोन इट एज विंग्स, ठीक है ना, विंग्स जो खुले हुए हैं, सही है ना? कैन यू सी दैट इट इज लाइक विंग्स ओनली, है ना? ये क्या है आपके पास, अगर हम इसको मान लें दिस इज योर बर्ड इस तरह से, तो विंग्स से क्या है, खुले हुए। आप विंग्स को थोड़ा रोटेट कर सकते हैं, विंग्स जब बंद हो जाएंगी, सो ऑल ऑफ दीज ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव दे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। कैन यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई, दिखा सबको? अगर विंग्स जो क्या हो जाए, विंग्स इफ दे आर कंप्रेस्ड, अभी तो खुले हुए हैं, बिल्कुल ओपन है, इफ यू क्लोज द विंग्स, अरे कृष्ण प्रिया अरसलान, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, थोड़ा बहुत समझ Yes, में। sir. विंग्स समझ में आ रहा है ना, कि विंग्स की तरह हमने खोल के दिखाया आप, विंग्स तो बंद भी हो सकते हैं ना, तो बंद होंगे तो सारे के सारे ओ नेगेटिव दे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन मेटल एटम। कैन यू सी दैट? यस सर। है ना? अब देखिए जरा ध्यान से, सो ऑल ऑफ दीज विल बी, मतलब वो अंदर की तरफ हम दिखा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज विल बी गिविंग इलेक्ट्रॉन टू वन मेटल एटम। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये भी दे रहा होगा, और ये नाइट्रोजन जो है ये भी दे रहा होगा। So now in this case, can you tell, here we have 1 2 3 4 5 6, so ये तो सबसे पहली बात हेक्साडेंटेट हो जाएगा, there are 6 atoms which are donating hexadentate। अब इसके नाम के पास पहले आते हैं। इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को हम इथाइलिन बोल दें, CH2 वाले पार्ट को तो इथाइलिन बोल सकते हैं, अरे बोलो भाई। इस पार्ट को इथाइलिन बोल दें, हाँ ना बोलते रहेंगे, ठीक है ना, इथाइलिन बोलते हैं। डू वी सी एनी अदर इथाइलिन? और है कोई CH2 जैसा और कुछ है? नहीं सर। नहीं है ना, इथाइलिन है, ठीक है, इथाइलिन। अच्छा, नाइट्रोजन एक लग गया, नाइट्रोजन दो लग गया, इथाइलिन पे ही डाइअमीन लग गया, इथाइलिन डाइअमीन, 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 ठीक है। अच्छा, ये पर्टिकुलर, अच्छा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है किसी को? CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। मे बी आप लोगों ने विनेगर का पढ़ा है, क्लास 10th में विनेगर था, वही एसिटिक एसिड। अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया CH3COO, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये क्या होगा, व्हाट विल बी दिस फ्रैगमेंट नोन एज CH3COO नेगेटिव। जैसे ऑक्जेलिक एसिड था तो ऑक्जेलेट बन गया, एसिटिक एसिड है तो क्या बन जाएगा? Acetate. वेरी गुड, एसीटेट। तो आप लोगों को एसीटेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैन यू सी? यस सर। ये कितने एसीटेट दिख रहे हैं बताइए जरा? 2। हाउ मेनी? 2 और दिख रहा होगा, देखो थोड़ा ध्यान से, कितने दिख रहे हैं? हाँ हाँ, 4 है। 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा लिख दें, यस। टेट्रा एसीटेट, दिस इज द नेम। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं EDTA। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देयर इज 4 नेगेटिव चार्ज हियर, सो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ऐसे नाम सुनने में, आप लोगों ने देखा वो वीडियो? आप लोगों ने नहीं देखा लगता है, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा वीडियो लगता है वो वाला, शुड आई शो यू गाइस?
यू वांट टू सी दैट मीम? देखना है सबको? यस, हाँ ठीक है सबको सर। देखना है, सबको देखना है, पक्की बात? चलिए सुन लीजिए जरा। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। कैन यू हियर इट? नो सर। I have chemistry exams tomorrow and after Yes, sir, I can hear you. times to pronounce ethylenide diamine I have chemistry. ठीक है, तो आप लोग को अब नाम समझ में आ जाएगा। आई होप यू विल नॉट रिलेट टू दिस टाइप ऑफ मीम्स। यस सर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो इथाइलिन डायमीन बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे ना, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और वो जो कह रही थी ना, शी वाज टॉकिंग अबाउट द एसिटिक एसिड, अगर उसमें C3COOH लग जाता तो इट वुड हैव बीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए, आफ्टर दिस यू विल राइट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number. Right here, the number of atoms that have coordinate bond with central metal atom or ion, ठीक है। इसके लिए भी we will just write this down और फिर हम कुछ सवाल करते हैं, है ना। We are going to do some questions, उसी में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा like what is actually coordination number, ठीक है। You will not write anything, आप सिर्फ यहाँ पे देखें and I will explain all of these answers, ठीक है guys। चलिए, ओके सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। Now if you remember that number of atoms that have coordinate bond with central metal atom, तो जनरली ऐसा लग रहा है कि कितने लिगेंड्स है ना, जो कौन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, लिगेंड बनाता है, राइट। सो ऊपर ऊपर से अगर आप देखिएगा इसको तो इट वुड सीम लाइक वी आर टॉकिंग, व्हेन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, जनरली लोगों को लगता है इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे बहुत ही फास्ट आपका आंसर आना चाहिए। कैन यू प्लीज हैव योर माइक ऑन, इरम, अरसलान एंड कृष्णप्रिया, कैन यू प्लीज हैव योर माइक ऑन। यस। फर्स्ट केस में बताइए क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले केस में 6. अरसलान और इरम, हाउ 6, टेल मी। इरम क्या ख्याल है, 4 है ना इरम, है क्या ख्याल है अरसलान? यस सर। लिगेंड्स बता दो आप, लिगेंड्स बता दो, लिगेंड्स बता दो आप अरसलान, कम से कम कौन कौन सा लिगेंड दिख रहा है आपको? लिगेंड क्या है? देखो ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया ना, इसको हटा दे। यस सर। बाकी जो बचा वो लिगेंड हो जाएगा। यस सर, Cl2 और En2 कितने हो गए, कितने लिगेंड है हमारे पास? 2। अच्छा, जो एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड ही बोलते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल रहा है? इट इज द नंबर ऑफ एटम दैट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद। सुनो सुनो सुनो, बच्चे ये समझते हैं, बच्चे ये समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कृष्णप्रिया ने 6 आंसर किया, वो 6 आंसर कैसे, एक बात बताइए। ईएन जो होता है, ईएन के अंदर कितने एटम्स हैं जो कि, ईएन जो होता है बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, क्या डेंटेट है? ईएन पलटो, पेज पलटो, पेज पलटो, पेज पलटो, देखिए ईएन जो है आपके पास इट बाइडेंटेट है ना। तो इफ वी हैड 1 ईएन, उसमें से 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं, एंड वी आर हैविंग 2 ईएन, तो 2 इसके 4 एटम बॉन्ड बना रहे हैं। और क्लोरीन मोनोडेंटेट है तो इसके 2 क्लोरीन, तो 2 into 1 क्या हो गया? 2 ही हो गया, है ना। 2 into 1 आपके पास हो गया 2, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितनी है? 6। बात समझ में आई? अरसलान, इरम, कृष्णप्रिया, कृष्णप्रिया ने खैर सही दिया था। अरसलान एंड इरम, यू गॉट इट? यस सर। पक्का? चलिए ठीक है। कृष्णप्रिया, यू विल आंसर मी इन चैट, अरसलान एंड इरम, यू विल आंसर मी ऑन द वॉइस, ठीक है। अब बताइए, चलिए सेकंड वाले में बताइए जरा।
अरसलान एंड इरम। कृष्ण प्रिया आप हमको Six. चैट में मैसेज कर दीजिए। सर सेकंड वाले में कितना होगा? 4 होगा ना, 6 कहाँ से हो जाएगा इरम? CN क्या है? मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है, क्या है? Sir, कौन सा वाला? सॉरी व्हाट? Yeah, sorry, sir. Oh. I was looking, फिर मैं वो 6 वाले को देख रही थी। Sorry, आवाज मैं सही से 4th नहीं आ वाले रही। को देख रही थी। सर मैं अच्छा 4th 4th वाले वाले। को देख रही थी। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस विल बी 4, राइट? व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन? 1 अरे 1 EDTA है भाई। कितना होता है उसमें EDTA में? देखो जरा, 2 पलटो। 2? अरे पेज पलटो भाई मेरे, देख के बताओ, नोट्स में Yes, sir. देख के बताओ, तुक्का मारने से नहीं होगा। ठीक है, कृष्ण प्रिया ने एक आंसर। अरे सेकंड का कैसे होगा कृष्ण प्रिया? अच्छा वो ठीक ठीक ठीक, कृष्ण प्रिया राइट राइट। इससे पहले वाले का सही है, ये भी सही है, दो बार लिख दिया आपने। करेक्ट है, करेक्ट। हाँ जी, EDTA मिला आपको अरसलान? देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। अरे भाई इतना लंबा भी तो नाम लिखाया आपको इससे पहले ही। Okay. कहाँ देख रहे हैं आप? हिरम क्या हो जाएगा बताइए EDTA का? अरे ये लिखा नहीं था आप लोगों ने, हमने लिखाया था ना। ये लिखा नहीं आप लोगों ने? Yes, sir, ये लिखा तो है। तो 4 एग्जाम होगा। मतलब, अरे एग्जाम नहीं, एग्जाम मतलब क्या हो गया? 6 ना हो गए? 4 तो ऑक्सीजन हो गया और 2 नाइट्रोजन भी तो है। अरे दिखा ना, जैसे Yes, आपके sir. पास बाइडेंटेट तो 2 हो जाएगा, तो हेक्साडेंटेट तो 6 हो जाएंगे ना। दिस विल बी 6। व्हाट अबाउट दिस फोर्थ वन? देखो हम बता रहे हैं आप लोग को, यू आइडेंटिफाई कि लिगेंड कौन सा है। फिर आपको देखना है कि मोनो है, डाई है, टेट्रा है, पॉली है मतलब, या फिर पॉली है, एंड नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाई जो भी उसकी डेंटिसिटी है। डेंटिसिटी का मतलब भाई बाइडेंटेट तो 2 है डेंटिसिटी, ट्राइडेंटेट तो 3 है डेंटिसिटी, टेट्रा मतलब 4 है डेंटिसिटी। इस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई द लिगेंड मोनो, डाई और पॉली। जब तक आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको सही नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है? फोर्थ का तो इरम ने पहले बताया था, है ना इरम? भैया आपका आंसर अभी भी ठीक है। आप फिफ्थ का आंसर दे दें हमको चैट में। इरम, राइट द आंसर फॉर द फिफ्थ वन इन द चैट। अरसलान बताओ Yes, भाई, sir. ईएन का बताओ, ईएन क्या है? ये लिगेंड तो है ना? हाँ बोलो। Yes, sir, लेकिन मोनो, भी है। फिर मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, क्या है? ट्राई है और 3 है। देखो भाई देख के बोलो यार, नोट्स में देख के बोलो, तुक्का मत मारो ना प्लीज। अब जितना गलत बोलते रहेंगे ना वही चीज आपको याद हो जाएगी। हमसे चाह रहे हैं कि आप नोट्स में देख के बोले कम से कम। Yes, sir. आपको ईएन दिख ही नहीं रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है सर, अरे मेरे स्क्रीन में नहीं, आपके नोट्स में दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे नोट्स में दिखना चाहिए ना। आप Yes, sir. फिर लेजीनेस की मतलब हद होती है। चलो आप थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट अपना ही, सॉरी मैं ये भी तो जरा क्या बोलते हैं, नोट्स का फोटो भेजो हमको जल्दी जल्दी। Sir. आप लोग प्लीज आंसर करते जाए आगे, फिफ्थ सिक्स सेवन एट। यू हैव टू लुक एट नोट्स। कोई इसमें चाह रहा ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा किसी को याद होगा, ठीक है ना? आपको नोट्स देखना ही पड़ेगा। ठीक, कृष्ण प्रिया ने दे दिया आंसर। ये हाँ जी, कृष्ण प्रिया सही है, वेरी गुड। भेजा आपने नोट्स का? कैसे लिखा आपने? ठीक है, ये तो आपने सही से लिखा है, मोनोडेंटेट के लिए। फिर बाइडेंटेट के लिए ईएन नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं बाइडेंटेट में? हाँ सर दिख रहा है। तो फिर
ये तो पता होना चाहिए ना आपने क्या लिखा नहीं लिखा। तो ईएन की क्या आइडेंटिसिटी, हाउ मेनी एटम्स आर बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा? एक ईएन कितने एटम, कितने एटम्स होंगे Okay, sir. ईएन में So जो it's बॉन्ड करेंगे? 6, right? या 3 into 2, आई होप यू गॉट इट लाइक दिस, राइट? Yes, अब sir. चलो बताओ Okay, sir. सीएन में देखो, मोनो बाई डाइजेन क्या है? Sir, should be कुड बी 8. वेरी गुड। हाँ जी, चलिए सीओ के लिए बताइए, जल्दी बताइए। अब तो पहले तो सबसे पहले मोनो में चेक किया करो, इट इज प्रेजेंट इन मोनो में, सबसे ज्यादा आपके पास है ना, so you check whether it is present in mono or not. Yes, sir. Yes, sir. It should be 5. 5, ठीक है। अब ये देख लीजिए जरा, C6H5, C6H5. Sir, should be it should be 3. very good. C2O4, C2O4. एरम आपका 8 वाला गलत है। मोनो में है, C2O4 मोनो में है, देखो एरम। अरे फिर गलत है एरम। अरे भाई एरम, ये तो देख लो C2 लिगेंड कौन सा बताओ एरम, आखिरी वाले का 8 का लिगेंड कौन सा है? C2O4 ये पूरी चीज लिगेंड है ना, दिस होल थिंग। जी। नोट में आपको कहीं दिख रहा है C2O4 नोट्स में आपके? अरसलान आपको मिला C2O4? नहीं मिला? नहीं सर, मोनो में तो नहीं। हाँ, तो फिर बाय में एक एक करके चेक करो एग्जांपल्स। नहीं मिला ना? नहीं, तो कहीं नहीं है ना? कहीं नहीं है? No, नहीं है। So it should be 9. नहीं है, नहीं। 6. देखिए 6 हो गया, ये देखिए, इसको अगर आप कंप्रेस करके देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है ना? Yes. ठीक है, दिखना चाहिए था फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? इट इज बाइडेंटेड, सो इट विल बी 6। गॉट दिस? सबको समझ में आ गया है ना? Yes sir. ठीक है, सो यू हैव डन मेनी क्वेश्चंस। अब इसमें आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आप लोग काम करें, एक आप डेफिनेशन लिखिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या लिखिएगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स प्लीज बताइए। द लिगेंड्स, एक सेकंड ऐसे मतलब द मोनोडेंटेट लिगेंड्स, monodendate ligands which have more than one donor sites। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स दे विल बी ऑलवेज मोनोडेंटेट, यानी कि उनकी कैपेसिटी जो होगी ना, वो एक ही एटम से बॉन्ड कर सकते हैं, बट डोनर साइट उसमें 2 होंगे। अब 2 में से किसी एक से ही वो क्या कर सकते हैं? दे कैन हैव द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एनी वन ऑफ द पॉइंट्स, है ना? इसके थोड़ा डिटेल में अगर लिखना तो आवश्यक दीजिएगा, द लिगेंड्स हैविंग more than one donor sites but can coordinate through only one of them।
ठीक है, आपके पास एग्जांपल्स में एक तो CN नेगेटिव है. CN negative is also there in your organic chemistry. फाइल के ना चाहिए. CN negative, both carbon and nitrogen, they're having the lone pairs, carbon पे negative charge है. Similarly, आपके पास एक example था. Please write next. We have thiocyanate, है ना? क्या है आपके पास? Thiocyanate कैसे होता है? SCN. ठीक है, तो SCN में आपके पास देखिए इस तरह से बॉन्डिंग होती है. सल्फर है आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. ठीक है, सल्फर के पास तो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे दो और एक नेगेटिव चार्ज भी रहेगा. सो सल्फर कैन आल्सो डोनेट एंड नाइट्रोजन, बट डोनेशन होगा किसी एक ही से. आइदर सल्फर विल डोनेट और नाइट्रोजन, बोथ ऑफ देम कैन नॉट डोनेट. ठीक है ना, एक ही डोनेट करेगा, लेकिन कैपेसिटी दोनों के अंदर. दैट इज वाई एम्बिडेंट है ना, जैसा मर्जी. जैसे एम्बीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट मतलब कहीं बात नहीं करता, एक्सट्रोवर्ट मतलब हर जगह बात, और एम्बीवर्ड मतलब कहीं बात करता है कहीं नहीं करता. तो ये कभी डोनेट करेगा, कभी ये डोनेट करेगा. ठीक है, बट दोनों साथ में डोनेट नहीं करेगा. इज दिस क्लियर रिगार्डिंग एम्बिडेंटेट लिगेंड्स? यस और नो? पीछे नहीं गई? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब आप एक छोट मतलब थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और ये सारी चीजें जो है ना लिख लीजिए. अभी जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे ना वहां पे आपको याद हो जाएगा. IUPAC नेम्स ऑफ लिगेंड्स. IUPAC नेम्स ऑफ लिगेंड्स. थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन बस ये लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना, दिस इज ओनली हियर टू राइट. आपको हम याद करने के लिए तो कभी नहीं बोलेंगे, बट आई विल से दैट सजेस्ट कि आप इसको क्या कीजिए अपने, एटलीस्ट जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तब तक आप इसको अपने दीवार के पास जहां पे पढ़ रहे हैं ना टेबल में चिपका लीजिए, या फिर टेबल में एक शीट रखिए वेयर यू हैव ऑल ऑफ दिस रेडी. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेवी लगेगा अभी, बट हम क्या कह रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि याद करना ही नहीं. ठीक है ना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर. हम लोग इतने सवाल ही कर लेंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दीज आर न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिगेंड्स, और आपके पास कुछ और होते हैं उनका हम नाम लिखा देते हैं. न्यूट्रल लिगेंड्स में आपने लिख लिया. न्यूट्रल लिगेंड्स में दो तीन और कॉपी. ये आपके पास नोटबुक में रहने चाहिए ताकि जब भी हम पढ़ाएं तो आपके पास ये सारी चीजें मौजूद. ओके, आई डोंट वांट यू टू आप ऐसे बैठ के ऐसे मदरसे के बच्चों की तरह रटने मत लगिएगा इनको. ठीक है ना, ठीक है, कुछ और लिख लीजिएगा. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव H2O, तो इसको बोलते हैं एक्वा. ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास है NH3, इसको बोलते हैं AMMINE. दिस इज इंपॉर्टेंट अमीन के लिए. इफ यू हैव CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल. दिस इज कार्बोनिल. इफ यू हैव NO, दिस इज नोन एज नाइट्रोसिल. इफ यू हैव CS, इसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल. थायोकार्बोनिल. ठीक है, आराम से बैठ के बस लिखिए अभी आप. इसमें से कुछ ही इस्तेमाल होते हैं, बट आई थिंक एक बार अगर आप लिख लेंगे ना फिर आपको हेल्प हो जाएगी. The next class we will be completing IUPAC nomenclature of coordination compound है. इस वजह से ligands का नाम अभी आप लीजिए, कल जब आप क्लास में आएंगे then we can start with the rules and then practice it.
Now we have done main questions of the coordination number वाला किया है. वो आप लोग को पता होना चाहिए how to what should the coordination number if you have been given any of the coordination complexes. दूसरी चीज counter ion पे चार्ज क्या होगा उसके हिसाब से complex ion पे चार्ज क्या होगा. What is the central metal atom and what are the ligands. इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए. ठीक है. कितना हो गया अरसलान कृष्ण प्रिया नरम. Yes, Sorry, Arsalan, sir? how much you have done? I am a carbonator, sir. Carbonate to. Can you guys